This is Akashvani. Time for a weekly program, Our Guest. I hand over the mic to the show host, Nitish Arora, for the same. Pick up the daily newspaper, peep into any of the television channels or on the social media, listen to the radio, even if it is not a news-based radio station. The topic of the day, topic of the month at this time of the year in Delhi is pollution. That is a huge challenge for all of us. And if we are thinking that only government can deliver and the agencies of the government can deliver, then we all are doomed. Not that the government is not doing its job. The government is doing a tremendous job. But then what are the initiatives of the people? What are the initiatives of the citizens? What are we doing? Are we not responsible for the mess that we have created? If you find that this is a relevant question, we have a few answers for you today in our guest today. I'm very honored to have founder president of WMARS, that is Waste Management and Recycling Society, Mrs. Deepali Sinha, as my guest today. Deepali ji, welcome to Akashvani. Thank you. Waste management and recycling. Why were you prompted to bring in something like this? Waste management, I think it's a very unorganized sector. So हम सबको मिलके ज़रूरी है कि इस पे काम करना ज़रूरी है. एंड आई थिंक इसमें इंडिविजुअल एंड जो कॉरपोरेट हैं उन सबको एक होके और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पे वी हैव टू वर्क. And this is the waste which is generating most of the pollutants. Yeah. So what is the kind of pollution that we are facing because of the waste? First we have to understand कि what is the waste. So waste is that कि what we created after we used, तो उसके बाद जो लास्ट हमारा प्रोडक्ट बचता है दैट इज़ द वेस्ट. सो फर्स्ट थिंग हमें वेस्ट को क्रिएट अपनी लाइफस्टाइल को वी हैव टू चेंज ताकि वेस्ट जो है कम से कम क्रिएट हो. सेकंड जो वेस्ट है उस वेस्ट को कैसे प्रॉपर मैनेज हो ये हम इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो वी आर रिस्पॉन्सिबल कि हमारे वेस्ट को क्या ये प्रॉपर जगह पे जा रहा है या नहीं. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये नहीं कि हम चीज़ों को यूज़ करने के बाद दैट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर. अब जो वेस्ट है उसको इट्स नॉट इन आवर हैंड, बट एक जागरूक नागरिक होने के नाते दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा जो वेस्ट है वो प्रॉपर चैनलाइज हो, प्रॉपर जगह पर पहुँचे. To begin with, actually, every household or every individual should try that minimum of waste is generated by an individual or a source. Yeah, definitely. And segregation is the most important things of waste management. Waste segregation, as Deepali ji has said, that whatever we generate in our household and we dispose it off, yes, the agencies do take them away, but that waste ultimately becomes a pollutant. And that is the pollution which is affecting the health of all of us. So she has brought in the point of waste segregation. This is minimum that all of us can do. Now what is that? How do we segregate our waste? डिफरेंट वेस्ट जो हैं जनरली आप हाउस होल्ड उसमें देखते हैं कि हमारा प्लास्टिक वेस्ट अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट अलग होता है, फूड वेस्ट अलग होता है. सो सबसे पहले तो हम ये हमारा कंसर्न है कि हम किसी भी तरह के वेस्ट को मिक्स ना करें. बिकॉज ये अगर हम वेस्ट को मिक्स करेंगे तो ये सीधा लैंडफिल में जाता है और लैंडफिल में जाके जो है उसको सेग्रीगेट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. एंड फाइनली क्या होता है कि या तो वो लैंडफिल में जाता है और इसके बाद आप देखते हैं जो हमारे प्लांट्स और जितने भी जो उससे एयर निकल रही है वो सारी पॉल्यूटेड है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है. सो हमें लैंडफिल में ना जाके वेस्ट को सेग्रीगेट करके उसको प्रॉपर रिसाइकलर तक पहुंचाना, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आप यू सेग्रीगेट प्लास्टिक वेस्ट डिफरेंटली एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अलग से आप रखें. ग्रीन वेस्ट को मिक्स ना करें, ग्रीन वेस्ट को अलग करें. और आई थिंक आजकल तो सभी लोग जो हैं दे आर मेकिंग दिस फर्टिलाइज़र विथ फ्रॉम द ग्रीन वेस्ट. तो आप उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं और आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं. बहुत अलग अलग जगह से आप ढूंढ सकते हैं
कि कैसे हम अपने ग्रीन वेस्ट को फर्टिलाइज़र में यूज़ करें और आप अपने जो प्लांट्स हैं उन पे उसको इम्प्लीमेंट करें. So that is absolutely very clear that even if the waste that is generated, the green waste that is residue of your food items, food particles, if you are mixing it with the plastic and the whole thing goes into the landfill, that is the major contributor to the pollution that we are facing on land pollution and even air pollution. So you said that at an individual level, we as citizens should do it. So when you took up this initiative, when did you started this initiative, and what changes you feel that you have brought in? कई सालों से मैं इस पे काम कर रही हूँ. स्पेशली जो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो इट्स वेरी हार्मफुल. सो प्लास्टिक वेस्ट को हाउ टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, तो उस पे भी हमें सोचना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए वी डिड मैनी प्रोग्राम्स लाइक थैला बैंक. या सो थैला बैंक कॉन्सेप्ट ये था कि हमने सोसाइटीज़ में जो जितने भी ओल्ड क्लॉथ थे लाइक बेडशीट्स वगैरह वो कलेक्ट करने के बाद उसको जो वहाँ पे मेड्स काम कर रही थी उन मेड्स से उसके थैले बैग बनवाए, ताकि वो बैग जब तैयार हो गए उन बैग को हमने हर टावर में उसको बंच को हैंग किया कि आप यूज़ करें और वापस इसको यहाँ लेके आएँ. So friends, if you are looking for solutions, see how convenient a solution is this. If we are living in a multi-storied building, we can collect the waste clothes from all the flat owners, use your maids, and if you know stitching, why can't you do it yourself? So stitch up a few thellas, as she said, and hang them at the reception. Prompt every user to take that thella, bring vegetables home, bring whatever consumables you are bringing, and then keep the thella. Such a beautiful, such a small initiative but long lasting effect. What else? What more? Yeah. So second thing, we have to create our habit. जब भी हम घर से बाहर निकले, जैसे हम मोबाइल को लेना नहीं भूलते, ऐसे ही हमें एक बैग कपड़े का लेना नहीं भूलना अपने साथ. Which means you very conveniently can say no to the polythene bag which is offered by the shopkeeper. Yeah, definitely. हमें हर एक इंडिविजुअल को ये ओथ लेनी है कि we will not use single use plastic, especially single use plastic. That polythene bag है. Disposable के लिए भी मैं आपको बताऊं, we created बर्तन बैंक. This is very popular in our society. बर्तन बैंक. What is that? एक्चुअली गांव में तो हम सुनते होंगे कि टेंट हाउस से हमने बर्तन ले लिया, कुछ बड़ी भी पार्टी हुई, बट हमारी किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, हम जनरली क्या करते हैं, वी गो टू मार्केट एंड बाय दिस डिस्पोजेबल, यूज़ एंड थ्रो. लेकिन हमने बर्तन बैंक इसी तरह का बनाया ताकि आप पार्टीज़ में जब आपको ज़रूरत हो, इफ़ यू रिक्वायर्ड, तो टेक दैट बर्तन फ्रॉम अस फ्री ऑफ कॉस्ट. No that is charges. You are doing at your own society level and prompting other societies to do. Yeah, definitely. In many societies now implement so this. Wonderful. Friends, on Dhanteras, when you are buying bartan for your home, why don't you buy a few for your society? I understand that most of the societies are having their clubhouse. Donate these bartan, these utensils to the clubhouse, so that next time whenever there is a party in the clubhouse, they are not depending on disposable plastic cups, plates and all those, which is generating huge, such a wonderful concept. Anybody who is listening to this, why don't you take an initiative? All those RAWs in your societies, why don't you take this initiative? I'm sure that every household will at least can give 5 bartans to the club. Such a wonderful concept. Second benefit is जो मनी हम डिस्पोजेबल में स्पेंड करते हैं, वो मनी अगर आप अपनी मेट को दे देंगे और उससे वॉश करा लेंगे, तो आई थिंक वो भी खुश रहेगी और चीजें भी चलती रहेंगी. So if there is a problem, if anybody thinks that Bartan Bank is going to create some problem, which is cleaning those bartans, so whatever money you were supposed to spend on the disposables, you give to the cleaners and they will clean it and wash it for you. And they will also have some additional income. और वो दुआएं जो मिलेंगी वो additional होंगी आपको. So इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में आप changes कर सकते हैं. और how to save our environment, it's our responsibility, because in future time
एटलीस्ट जो हमारे बच्चे हैं वो खुली हवा में ये सांस ले सके प्रॉपर ढंग से. Before the start of the program, you said that you are working on 7 hours. Yeah. What are these 7 hours? 7 आवर एक्चुअली जो हमारी लाइफ स्टाइल है, वी हैव टू चेंज अवर लाइफ स्टाइल नाउ इट इज. 7 आवर इज रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिपेयर, रीयूज, रिसाइकिल एंड रॉट. रीथिंक मीन्स अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी परचेजिंग करते हैं, सो फर्स्ट वी हैव टू रीथिंक, इज इट रिक्वायर्ड और जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ये हम और आप जानते हैं. सेकेंड, वी हैव टू रिफ्यूज सिंगल यूज प्लास्टिक. सिंगल यूज प्लास्टिक इज वेरी डेंजरस. इट्स नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक एक्चुअली. इवन हम ये नारियल पानी के लिए जाते हैं, ऑलवेज वो प्लास्टिक स्ट्रॉ देते हैं, Which is not required. which is not. You carry your steel straw purchased from the market and keep it with your bag. Whenever you feel you want to drink coconut water, take your steel straw, not that plastic straw, because it's direct goes to landfill and create the problem. So friends, first R is rethink. So whatever step you are taking, or purchasing something or doing anything in your life, just rethink, give it a second thought that what are the consequences of that particular step of yours. Is it good for the society? Is it good for yourself? And a small rethinking absolutely can save a lot. Then refuse anything which you feel is not good for our environment, for our planet, for our habitat. Refuse it. Refuse it. Yes, say, I do not want this single-use plastic. Refuse. Next R? Reduce. Reduce. Yeah. Try to purchase big things. जो हम छोटे छोटे आइटम ले लेते हैं, उससे बेटर है कि हम बड़ी चीज़ों को परचेज करें. सो जहाँ हम छोटी छोटी बॉटल्स या छोटे पैकेट्स यूज़ करते हैं, अगर हम एक बड़ा लेंगे तो आई थिंक वो एक हम काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं. सो हमें रिड्यूस भी करने अपनी लाइफ में जो भी हम अपने घर पे आइटम लेके आ रहे हैं, सो वी हैव टू रिड्यूस. So believe in minimalistic life. Whatever is required only, bring that home. There's absolutely no need to fill your home with the garbage and in return also fill the society with the garbage. So that is what Deepali ji wants to tell. ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा वेस्ट है कम से कम क्रिएट हो. एंड सेकेंड थिंग इज रिपेयर. अगर आपका कोई भी आइटम इस तरह का है तो डोंट ट्राई टू थ्रो इट कि और उसको वेस्ट में कन्वर्ट. तो वेस्ट में अगर हम कोई भी आइटम अपने घर लेके आते हैं तो उसको वेस्ट में कन्वर्ट करना और उसको लाने की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करना इम्पोर्टेंट है. Friends, just that you can buy anything doesn't mean that whatever you have used for some time. I think Prime Minister Modi has so many times emphasized on this. He also spoke about Bartan Bank. He also spoke about Toys Bank. So you throw away your toys which are not required, but there are n number of people who really want to have those toys. So don't create a waste. Recycle it, use it. एक ही कॉन्सेप्ट है, ट्राई टू रिड्यूस आवर वेस्ट. सो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आइटम हमने यूज़ कर लिया है उसको रिसाइकिल करके उसको एक नई जान देना, एक नई लाइफ में कन्वर्ट करना. सो दैट इज़ ऑल्सो हमारी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए. Deepali ji, such small and such interesting steps that you are telling to reduce the waste and reduce the pollution in turn. I think if people start, first thing is that after listening to this interview, if they start rethinking that what they are doing, because life is not only about living, life is also about how you leave this planet. Are you leaving this planet a little better place to live? Or you are creating a havoc for the generations to follow? That is for you to think, and that is very important. I think you must be having lots of things to tell, but we are running short of time, and most of the things are addressed to. If anything that you really want to tell my listeners, how they can be a warrior against pollution? I will say our small effort makes big impact. Deepali ji, thank you so much for being our guest today. Together, we make it a cleaner environment, cleaner planet to live in. Right. Deepali ji, thank you so very much for being my guest. Thank you very much.
You were listening to the weekly program Our Guest that is broadcast every Monday at 9:15 a.m. Don't forget to tune in next week, same day, same time and same frequency for more on Our Guest. Have a nice day.